Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and greetings of the day, my dear students. So, this in this series, I'm going to start this series of videos which are related to the concepts of real numbers. Okay, inshallah, throughout the year, I'll be doing the same with all chapters. Okay, whatever chapters I explain, I'll go through first. This series will be named as HA. Okay, HA1, 2, 3, 4, so on. So actually, basically, I mean, what is HA? HA means home assignment. Okay, whatever home assignments I'm giving you, please practice it on a daily basis. And inshallah, if you do, it will be enough, and you'll score 80 out of 80. Okay, so in mathematics. So now let us go to this is the first series. This is the first video of the series real numbers HA1. Okay, in this series, we are going to see the concept what we call it as factorization. Okay, factorization. So, what is factorization, my dear students? So, factorization is the way in which we express the given number as a product of numbers. A product of numbers. I am talking about factorization. Okay, if you express any given number as a product of two or three or four numbers, then it is called as factorization. For example, if you take the number 12, factorization of 12. So factorization of 12, I can write it as, for example, 2 times 6. This is called as factorization. Okay, but which is what is important for this grade 10, we are going to study prime factorization. What is that? We are going to study about prime factorization. What is prime factorization? Expressing the given number as a product of prime numbers is called as prime factorization. For example, you have the number 36. Okay, 36, we can write it as, so all the factors should be prime numbers. That is prime factorization. Factorization, no need of prime numbers, it can be any numbers. But when I say prime factorization, this 36 should be written as a product of only prime factors. So for example, how can you write? I'll write it as 2 times 18, but 18 is what? 18 is not a prime number. So I'll write 18 as 2 times 9, and 9 is not a prime factor. So therefore 9 I will change it as 3 times 3. Now if we check, 36 is written as 2 times 2 times 3 times 3, where 2 is a prime number, and 2 is also a prime number, 3 is a prime number, and 3 is also a prime number. So this is called as prime factorization of 36. Okay, so now you understood the concept of prime factorization. Prime factorization means expressing the given number as a product of prime numbers. समझ में आ गया सबको? कुछ नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है. सो क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसको अपने प्राइम नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना है, बस उतना ही है. सो सर प्राइम नंबर्स आपको तो मालूम है. सो लेट मी राइट फर्स्ट प्राइम नंबर्स, सम ऑफ द प्राइम नंबर्स. So prime numbers किसको बोलते हैं भाई? Prime numbers are the numbers which have only two factors. What are the two factors? One and itself. One और खुद उसी नंबर, यानी ये दो ही नंबर से डिवाइड होता है, तो कोई दूसरा नंबर डिवाइड ही नहीं कर सकता प्राइम नंबर्स को. ओके, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, so on. ओके, सो ये पूरे प्राइम नंबर्स है. तो ये प्राइम नंबर्स क्यों बताया भाई? ये लिख लो बच्चे, लिख लो, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जब तक याद नहीं होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन सही तरीके से नहीं कर सकेंगे. तो लिख लो प्राइम नंबर्स. ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन, प्राइम नंबर्स. सो ट्राई टू बाय हार्ट देम. ओके, ट्राई टू रिमेंबर देम. 2, 3, 5, 7. Yeah, the concept of prime numbers is the given number, if the given number is divisible by only two factors, that means one and itself, or
वन से और खुद उसी नंबर से डिवाइड हो सकना, कोई दूसरा नंबर डिवाइड ही नहीं कर सकना, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर. ओके, सो 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड 23 एंड सो ऑन. ओके, दीज आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स. ये प्राइम नंबर्स का लिस्ट याद रहना जरूरी है. ओके, अब देखेंगे होम असाइनमेंट 1 का HA1 का क्या दिया हुआ है. सो HA1 का फर्स्ट ऑफ ऑल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 124 और 140 3825. ओके, सी ओके, ये तीनों को फाइंड करना चाहिए. चलो भाई 124 को करेंगे फर्स्ट. ये हमारा आज का HA1 है, होम असाइनमेंट 1. ओनली 3 प्रॉब्लम्स, और 3 प्रॉब्लम्स करके छुट्टी. सो 124 भाई. उसके बाद हमने ग्रेड 6 में डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे. सो व्हाट आर द डिविजिबिलिटी रूल्स. डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, आखिरी नंबर 0 2 4 6 8, आखिरी डिजिट, सॉरी आखिरी डिजिट क्या रहना चाहिए, 0 2 4 6 8. यहाँ 4 है नहीं है, so that means it is divisible by 2. 2 how many times here, 2 12 में 6 times and 2 4 में 2 times. अगर किसी को डिवीजन नहीं आता है तो जस्ट मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ डिफरेंट वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू डू डिवीजन. ओके, शर्माना नहीं बेटे, दोनों के पास शर्माना नहीं है, एक डॉक्टर के पास और एक टीचर के पास. अगर शर्माएंगे तो नहीं पढ़ सकेंगे. If you shy away from two people, doctor and a teacher, you cannot learn and you cannot become a better person. Okay, health wise and knowledge wise. So now 62 times, और 2 how many times, 2 3 times है, और 2 1 time है. और 31 क्या होगा, 31 no number divides 31. Understood? So therefore 31 1 time. So क्या लिखेंगे भाई, 124 equals 2 times 2 times 2 times 2 times 31. समझ में आ गया सबको. 124, very good. Prime factorization of 124 is equal to 2 times 2 times 31 because 31 is a prime number. Okay, and next उसके बाद देखेंगे हम 140. चलो भाई 140. So आखिरी में नंबर it is ending with 0, so it is divisible by 2. So let us divide it with 2. 2 how many times, 2 sevens are 14 and 2 zeros are 0, 270 times. Now it ends with 0, therefore it is divisible by 2. 2 how many times, 2 threes are 6 and 1 is remainder, 1 and 0 10, 2 fives are 10. Now divisibility test of 3, because it doesn't ends with 0 2 4 6 8, so therefore let us go to the next prime number. What is the next prime number, 3. So what is the divisibility test of 3? My dear students, my videos inshallah I will explain everything from basics. If you are learning these videos or if you watching these videos and if you write whatever I say, it will be very useful for you and you will understand and you can do maths better. Okay, so now what is the divisibility test of 3? बहुत आसान है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 का. जितने डिजिट है पूरों को ऐड करो, 3 + 5 8. इज 8 डिविजिबल बाय 3? 8 को 3 डिवाइड करता क्या, नहीं. सो देयरफॉर 3 इज नॉट 3 doesn't divide 35. Okay, so what is the next prime? Go to the next prime, 5. So 5, because what is the divisibility test of 5? The divisibility test of 5 is the number should end with 5 or 7. Is it right? So अब चूंकि 5 से end, sorry 5 and 0. Okay, so यहाँ 5 से end हो रहा है, since it is ending with 5, so therefore it is divisible with 5. So 5 how many times, 5 sevens are 35 and 7 is a prime number, so divided 7 ones are 7. So understood everybody how to do the prime factorization. So therefore 140 can be written as 2 times 2 times 5 times 7. Understood? This is the prime factorization of 140. और उसके बाद क्या होमवर्क बचा हुआ है भाई,
3825. 3825. So let us do it. So the third problem for today is 3825. अब सिंस इट 2 से डिवाइड होता नहीं होता, 1 मिनट में बोलना, सॉरी 1 सेकंड में नहीं होता, because it is not ending with 0 2 4 6 8. So therefore it 3 से, let us check, 3 plus 8 11, 11 plus 2 13, 13 plus 5 18. So is 18 divisible? अगर 18 याद नहीं है, 1 plus 8 करो. What is 1 plus 8? 9. So is 9 divisible by 3? Yes sir. So therefore the given number is also divisible by 3. So come on, 3 how many times? 3 ones are 3, 3 twos are 6, 22. 8 minus 6 is 2. So 2 and 2 becomes 22. 22 में 3 sevens. 3 sevens are 21. 1 remainder. 1 and 5 15. So 3 fives are 15. Chalo, now let us check. 1 plus 2 3, 3 plus 7 10, 10 plus 5 15. So yeah, 15 is also divisible. अगर 15 समझ में नहीं आ रहा सर, 1 plus 5 6, 6 is also divisible by 3. So therefore 1275 is also divisible by 3. So divide करो. So 3 4s are 12. So 0 है remainder. So 7 में 3 2s are 6. 1 is the remainder. 1 and 5 15. So 5 times 3 5s are 15. Okay. So उसके बाद चलो भाई, what is the number? Yeah. Now 4 to 5. Let us add 4 plus 2 6. 6 plus 5 11. Is 11 divisible by 3? No sir. So therefore let us, what is the next prime number? Next prime number is 5. Let us go to 5. 5 how many times? 5 5 5 in 40. 5 8s are 40. Is it right? 42 minus 40 is 2 is remainder. So 2 and 5 becomes 25. 25 में हम कितने मरतबा? 5 5s are 25. So it is 85. Now also, since we have checked with 2 3, no need to go back. So check with 5. Yes, it is ending with 5. So therefore it is divisible by 5. So 5 ones are 5. Or what is the remainder? 8 में से 5 निकालो तो 3 and 35 7 times. And 5 17s are 85. Okay. Or 17 itself is a prime number. We have 13 के बाद 17 है. So 17 is also prime number. So चलो 17 ones are 17. So therefore 3825 equals 3 times 5 times 5 times 17. So understood everybody the concept of prime factorization? So और एक बार तो last repeat करो भाई. What is prime factorization? कुछ नहीं है, जो नंबर दिया हुआ है उसको आप एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखना है, यानी नंबर टाइम्स नंबर टाइम्स नंबर. ये नंबर्स क्या होना है? प्राइम नंबर्स होना है. सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? वी ऑलरेडी नो 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन. सो ये याद रखना है. उसके बाद ये होमवर्क है अपना, होम असाइनमेंट. ओके, इतना समझ में आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ. ओके, सो ये प्रैक्टिस करो इंशाल्लाह. ये अब मैं समझाया ना, उसको देख लिए आप लोग. नाउ बगैर देख के आप खुद करो. अगर डाउट आया तो रोक के फिर करो. देखो, अगर उस वक्त तक करो जब तक आप इसको एक एक प्रॉब्लम को 2 मिनट के अंदर खत्म ना करें. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 124 1 मिनट में खत्म हो जाना. तो अगर 1 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं तो फिर से रिपीट करो. ओके, इसकी आदत बना लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th में. ओके, हर मार्क 2 मिनट्स, हर मार्क 2 मिनट्स. दैट मीन्स 1 मार्क का प्रॉब्लम 2 मिनट्स, तो 2 मार्क का 4 मिनट, 3 मार्क का 6 मिनट. ओके, और इसी तरीके से 4 मार्क का 8 मिनट, 5 मार्क का 10 मिनट. तो इसके अंदर जब तक आपको करना नहीं आए रिपीट करो. तो इतनी मर्तबा रिपीट करो कि आपका पेन स्पीड और ये डिविजन्स वगैरह खुद ब खुद इट शुड फ्लो फ्रॉम योर ब्रेन. ओके, तो इतना आसान हो जाए. सो इंशाल्लाह ये सीरीज है,
हर चैप्टर का होगा। HA1 सीरीज है रियल नंबर्स का। इंशाल्लाह फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है। मैं कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा और कॉन्सेप्ट वाइज समझाऊंगा। प्लीज रिमेंबर एंड डू देम, रिपीट देम, अंडरस्टूड। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई पीआर के लिए मुझे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, और वो क्या है उसका बेल आइकॉन भी दबाने की ज़रूरत है। मगर चूंकि आप लोग 10th पढ़ने वाले हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाओ। यू विल फाइंड इट इन आई मेक ए प्लेलिस्ट ऑफ HA1। ओके, HA होम असाइनमेंट। ओके, उसमें आप जाके चेक कर लो, हर चैप्टर वाइज होगा। समझे? अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।